past perfect continuous. Past perfect continuous. ठीक है. Like continuous with time. Like if I say I had been in UK for 2 years. I had been in UK for 2 years. मैं 2 साल तक UK में रहा था. अब जैसे मैंने आपसे पूछा Did you go there? आपने कहा Yes, I went there. Did you go there? Yes, I went there. How long did you stay there? Or how long did you stay? Or how long had you been there? समझ गए आप? दोनों बोल सकते. How long had you been there? तो आप कितनी देर रहे वहां? How long had you been there? या मैं वहां पे 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था. I had been waiting for him for an hour. तो सिंपल है ये. Present past perfect continuous. ठीक है, सिंपल. Future future indefinite. The future indefinite is simple formula subject plus we use will plus V1 plus like I will go there. लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है. I will go there तो कह दिया हमने, लेकिन शॉर्ट में we speak I'll. कुछ पता नहीं क्या इस पे स्टिकी कुछ लग गया कीबोर्ड पे. So I'll, we speak I'll. Short, I'll go there. Similarly, you say will. You say they'll. You say she'll. I'll go there. We'll go there. They'll do this. She'll do this. He'll do this. Similarly, for will not we use want. Like will not, short form is want. Like I won't go there. I won't go there. मतलब मैं वहां नहीं जाऊंगा. तो will not go there भी कह सकते, but I won't go there. She won't do this. Like this. This is simple. But we use shall
with I and we, but in question form only. This is the form. Shall I be के साथ यूज करोगे लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में. For questioning, you will use shall. I be के साथ. जैसे आपने कहा, तो इसका मतलब एक्चुअली हो जाता है करूं, जाऊं. जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपसे कहा shall I teach you. क्या मतलब हो गया? क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको? Shall I teach you? क्या मैं पढ़ाऊं? तो shall we sit here? क्या हम बैठ जाएं यहाँ? तो ये फ्यूचर में इस तरीके से जाएगा. This is simple future. But when you use will with any subject like will you, तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है. और जैसे मैंने कहा will you please help me, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये रिक्वेस्ट बन गई. अब क्वेश्चन कहते था will you do this, क्या तुम करोगे ये, लेकिन प्लीज लगाने से रिक्वेस्ट हो जाती है वही चीज. will you please do it, क्या आप इसे करोगे. will you please help me, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. एक चीज बताइए मेरे को, एक चीज मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. एक तो यहाँ पे will you please help me, और अगर मैं ये बोलूँ कि would you please help me, would you, हाँ, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो हम डिटेल में मॉडल्स में पढ़ेंगे, पर आप कह सकते हो. आप will you please help me कह सकते हो, can you please help me कह सकते हो, could you please help me कह सकते हो, would you please help me कह सकते हो. जो मर्जी आए वो लगा लो, कह दो. can लगा लो, will लगा लो, would लगा लो, could लगा लो, जो मर्जी आए सो लगाओ, नो प्रॉब्लम. बट डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. लगा आप कुछ भी सकते हो, जो आपकी इच्छा हो. मीनिंग सबका थोड़ा थोड़ा सा अलग है, बाद में करेंगे, पर लगा आप कुछ भी सकते हो. ठीक है. तो विल यू प्लीज हेल्प मी, तो ये रिक्वेस्ट होगी. विल यू प्लीज फॉलो मी, क्या आप मेरे पीछे आएंगे. यू प्लीज फॉलो मी. अब चलिए इसके साथ हम एक फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ लेते हैं. ये भी बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है. अब इसमें हम देखो मे, माइट, मस्ट और विल प्लस बी और प्लस और ये यूज करेंगे. ये वाइट बदल दिया. अब करेंगे कैसे इसको यूज. मे, माइट, मस्ट, it's a different category and will is different. When you are talking about an action in future, in continuous, कि ऐसा हो रहा होगा फ्यूचर में, it will be raining tomorrow, तो ये सही है. It will be raining tomorrow.
दिस इज फ्यूचर एक्शन इन कंटिन्यूस, कि ऐसा हो रहा होगा फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में भी हो सकती है ये बात। Because you are sitting here and if I ask you about your mother, what is she doing? तो आप कहो इस समय वो 9 बज रहे में खाना खा रही होगी। तो अब आपको कहना क्या है, मेरी माँ खाना खा रही होंगी। तो आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, मेरी माँ, माय मदर विल बी ईटिंग फूड। नो, अभी खा रही है इस समय। माय मदर माइट बी ईटिंग। अब इसमें थोड़ा समझो, तो मे आएगा पॉसिबिलिटी के लिए, माइट आएगा लेस पॉसिबिलिटी के लिए, अच्छा, और मस्ट आएगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। अब कैसे? अब आपने कहा मेरी माँ इस समय खाना खा रही होंगी, माय मदर मे बी ईटिंग फूड। अरे वो तो जरूर खाना खा रही होंगी इस समय, शी मस्ट बी ईटिंग फूड दिस टाइम। शायद खाना खा रही हूँ, शी माइट बी ईटिंग फूड दिस टाइम। कल खाना खा रही होंगी, शी विल बी ईटिंग फूड टुमारो। तो ये मेन चीज है इसकी। अब आप ध्यान रखिएगा, कहीं हम कहते हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे होंगे बाहर। कहाँ है आपके बच्चे? अरे भैया खेल रहे होंगे बाहर, और कहाँ जाएंगे? दे मे भी नहीं, दे मस्ट बी प्लेइंग, क्योंकि खेल रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग पर मस्ट बी प्लेइंग आउटसाइड। आई नो, पता है खेल रहे होंगे। आई नो दे मस्ट बी प्लेइंग like this. Yeah. Today, yes. Let me complete this, then I'll tell you. I'll give you information. Okay. Just let me finish this. Future continuous. So this is like this. Means if it is future continuous, then use will. If you think it is present, then use may, might for less may for possibility, might for less possibility, and must for strong possibility. ठीक. Okay, so this is future. So you will make sentences on future continuous and future indefinite and past perfect continuous. Okay. Now I want to inform